Beta, I'm taking questions from 7.6. That is integration by parts. So first question is x sin x. Okay. So that you will try yourself. I have taken x sine 3x because there was a scalar out here, so a little bit of more work is there. So if you take this second example, that is integrating x into sine 3x dx. One in the example I've already explained you must have seen other examples also. Now let's try it on our own. So first function, because that is algebraic, and second function, this one is trigonometric. Rule ILATE, you all remember. Okay, so first function we've kept as it is, we've integrated. I haven't shown that sign and I haven't mentioned that formula. I have done the integration straight away. You can do it once you do 2-3 questions. You'll master with that because simple integrations हैं तो आप इसको one go में कर सकते हो. Okay, so integration of sine 3x becomes cos minus cos 3x, and because of this 3x upon 3 as well. Okay, so there is a minus here and upon 3 in addition. Then this minus sign of the formula itself, integration of derivative of x becomes 1. Integral of sine 3x is minus cos 3x upon 3 dx. Okay, so the first portion of this becomes minus 1 by 3x cos 3x, and this minus minus makes it positive. And when you integrate this cos 3x once again, so that will become sine 3x upon 3. So 1 3 was already there. So that is why the scalar out here is coming 1 upon 9 sine 3x plus c. Okay. So that was a simple direct use of formula. Then third one is x square e to the power of x. So again, x square is your algebraic function and e to the power of x is exponential function. So first we will go for this as our first function. So first function as it is, integral of e to the power of x is e to the power of x minus integration of derivative of this. So I haven't written that, I've done that in one go. Okay, वो आपको भी practice करना है कि आप इसको straight away कर सको, छोटे छोटे calculations हैं. So derivative of x square is 2x, and then integration of e to the power of x comes out to be e to the power of x only. So the first part we'll copied as it is. This is scalar minus 2 we have kept outside. अब इसमें फिर से by parts लगाना पड़ेगा because two functions आ गए. Okay, so that can happen कि हो सकता है first go आपका जो है ये simplify ना हो के आपको वापस उसमें by parts लगाना पड़े. So again we had two functions here. We'll choose this as first function, algebraic one. This ILATE, exponential has to be the last choice. So again, first function as it is, integration of e to the power of x is e to the power of x minus derivative of x becomes 1 and integration of this is e to the power of x. अब second go में इसे फिर integrate करना है. Okay, तो यहाँ तक हमारा simplify हो गया. This will be copied as it is. This scalar multiplied inside minus 2x e to the power of x. Okay, this minus 2 with this makes it plus of 2, and integral of e to the power of x comes out to be e to the power of x, and of constant of integration of course has to be there. Right, then the fourth one you'll do yourself, children, because fourth and fifth are similar. Fifth में scalar भी है, तो I have done fifth for you rather than fourth. Okay, so in the fifth one, see, you have x and you have log 2x. Now ILATE, IL and then comes a. So this will be your first function, logarithmic function. X will be your second function. Although उसने x log 2x लिखा है because that's the way to write. Okay, आप ये पीछे x लिखोगे तो awkward लगेगा, confusion होगा. But then we know कि log has to be taken as a first function in the choice. So first function comes as it is, and integration of x will become x square by 2. I've done that in one go. Minus, now derivative of log 2x would be 1 upon 2x, and then because this was not x, so further into a 2. So ये 2 and 2 आपका balance हो गया, यहीं cut कर दो या यहाँ, whichever way. And then integral of x would be once again x square upon 2. Okay, so if first part simplified, you'll write it as it is, and for the second part you will integrate it once again, seeing what kind of function it has become. So एक हमारा 2 cancel हो गया था, इसमें एक x भी cancel हो जा रहा है, तो it reduces only to half times x. ये खाली x बचा है अब simplify होने के बाद. So integral of x is x square by 2. Hence that is your answer. Right? Now sixth one is x square log x, which you will try yourself, children. वही है, algebraic function है, logarithmic function है. Take this as first function, this as second. फिर जब आप लगाओगे अपना rule, ये आपका simplify हो जाएगा. Second net जो function आएगा, you'll easily be able to integrate that. Okay, now this is where you have a trigonometric function. These at times create problem. So we can do these directly, or we can do it by substitution, changing the form. Okay, so as I've shown you here, this was your expression x
Sin inverse x dx. So I am doing it by changing it to from inverse function to trigonometric function because inverse के expressions complicated आते हैं. आप straight away भी कर सकते हो. It's your choice. Okay, if you find that more short and convenient, short वो भी नहीं होगा. Sooner or later उसमें भी in the second step you'll have to go and do it by substitution. Directly वो हो ही नहीं पाएगा. Okay, first step में भी आप सीधे कर सको, but after that second वाले के लिए again you'll have to do trigonometric substitution. So I've done it in the beginning only. Okay, so we'll put this sine inverse x function as theta, then your x becomes sine of theta. That we know from inverse knowledge. And then differentiating dx is equal to sine का होता है derivative cos theta d theta आ गया. Fine. So transforming our integral x we had said is sine theta. Okay, sine inverse x was theta and then dx was cos theta d theta. तो ये इन नेट हमारा थीटा साइन थीटा कॉस थीटा डी थीटा. अब यहाँ पे 3 फंक्शंस हो गए तो इसको और रिड्यूस करने के लिए वी हैव दैट हाफ एंगल फॉर्मूला. वील यूज दैट. सो मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग इट बाय 2. सो हाफ ऑफ theta as it is and 2 sin theta cos theta has been merged as sin 2 theta here. Okay, now again we'll decide algebraic function first, trigonometric second. First function as it is, integral of sin 2 theta comes out to be minus cos 2 theta upon minus I've put here. Okay, so minus of cos 2 theta and then because of 2 theta upon 2 also. Then minus of the formula, paths के formula का, and integration of derivative of theta with respect to theta is 1. And then again integral was minus cos 2 theta by 2. वो तो ये और ये expression same ही आना होता है. Okay, now so this becomes 1 by 4 theta cos 2 theta and this half will be multiplied here as well as this will become negative times and this will become 2 was here and 2 was here in the denominator, so 1 by 4 times and then these two negatives have made this positive. Now we simply need to integrate cos 2 theta. Integral of cos 2 theta would be sin 2 theta and of course upon 2 because of this. ओके अब ये थीटा तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए इसे कन्वर्ट करा था बट आंसर क्योंकि हमें क्वेश्चन एक्स में गिवन है सो वील हैव टू गो बैक टू एक्स. सो फॉर दैट वी गॉट थीटा हियर. सो यहाँ हमारा ऊपर था थीटा वाज साइन इनवर्स एक्स, उसका रिप्लेसमेंट हम डाल देंगे. फिर कॉस 2 थीटा था. अब यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा. सो थीटा एंड एक्स के बीच में आपको साइन से रिलेशन गिवन है और यहाँ पे cos 2 थीटा का आ गया एक्सप्रेशन. सो वी विल यूज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला एंड वी विल थिंक ऑफ अ फॉर्मूला ऑफ cos 2 थीटा इन टर्म्स ऑफ साइन थीटा क्योंकि मुझे साइन थीटा की वैल्यू एक्स पता है. तो एक हाफ एंगल फॉर्मूला ये होता है cos 2 थीटा का 1 minus 2 sin square theta. दैट इज व्हाट यू विल यूज हियर so that in the next go you can write this sin theta as x. Okay, so ये expression आपका बन जाएगा. That I'll discuss in the next step. Okay, so here now we had 1 by 8 scalar and then sin 2 theta. Of course again मुझे sin theta पता है x के terms में तो इसमें भी मुझे half angle formula लगाने पड़ेगा. sin 2 theta is 2 sin theta cos theta. So 2 sin theta and cos 2 theta. अब वो cos 2 theta भी मुझे sin के terms में convert करना पड़ेगा तभी मैं x के replacement कर सकती हूँ. Okay, so sin cos 2 theta can be written as under root of 1 minus sin square theta. तो ये cos theta की वैल्यू है जो मैंने sin में convert कर दिया because of this. Next go, you just keep putting wherever there is sin theta will be replaced by x. So this expression becomes 1 by 4. ये 2 and 8 has got cancelled. So 1 by 4 times x 1 under root of 1 minus x square and this was sin square sin theta was x. So x square हो जाएगा right and ये sin inverse x अंदर multiply हो रहा है. That becomes your answer. Okay, now the next one that is x tan inverse x. So similar है but इसका I have done it straight away. Like in this I had converted this to the trigonometric one putting sin inverse x as theta. इसको मैंने डायरेक्टली कर दिया बिकॉज ये डायरेक्टली ईजी होता है. ओके ये 9th वाला आप खुद करोगे. इन दिस ऑल्सो यूल हैव टू डू द सेम चिल्ड्रन. यूल हैव टू पुट cos inverse x as theta and somewhat similar type of working will be there so that you'll try on your own. Anyways, I've right now done for you 8th one which had x and tan inverse x and according to ILATEI comes first. So this is your first function, this is your second function. First function as it is
integration of x is x square by 2 minus integration of derivative of tan inverse x. So derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square and integration of x which is x square by 2. Okay, so first part तो simplify हो गया हमारा half x square tan inverse x, and for the second one ये scalar half हमने अलग रख दिया है. Now we had x square upon 1 plus x square left over. Okay, so उसको integrate करने के लिए फिर हमने क्या trick लगाई है, we have added 1 and subtracted 1. So 1 plus x square merge कर दिया because that was matching up with 1 plus x square in the denominator, and this will now after separating get cancelled to give you 1. 1 का इंटीग्रल करना हमें आता है. और जो लेफ्ट ओवर पोर्शन था फिर क्या बचा हमारे पास, माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हमें इसका भी इंटीग्रेशन आता है. ओके, सो हमारा जो एक्सप्रेशन एक्चुअली बचा था एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, उसमें हमने ये ट्रिक लगा दी है +1 एंड -1. ओके, and then इसको सेपरेट कर लिया as two functions. So for the first part, integration of 1 which is x, so this becomes half of x. ये half दोनों से multiply होगा, minus minus will make it plus half, and हमें पता है इसका इंटीग्रल होता है tan inverse of x. okay, तो ये डायरेक्टली इजीली आ जाता है, ये फंक्शन हमारा इजी होता है. वेरेज आप साइन एंड कॉस वाले में ट्राई करोगे सो ये एक्सप्रेशन आपका फिर कॉम्प्लिकेटेड आता है और इसमें आपको सब्स्टिट्यूशन करना ही पड़ता है. सो मैंने फर्स्ट में ही सब्स्टिट्यूशन कर लिया था. ओके, सो हियर आई हैव जस्ट डन रीअरेंजिंग लिटिल बिट कि ये tan इनवर्स x था, ये tan इनवर्स x था, तो ये मर्ज कर दिए एलसीएम लेके. सो दैट इज हाउ आई हैव प्रेजेंटेड द आंसर. ओके, now ninth one, as I said, you'll do yourself children, and 10th one, yes, sin inverse x whole square. sin inverse x whole square भी सब्स्टिट्यूशन से करना पड़ेगा. इनवर्स वाले मोस्ट ऑफ द टाइम सब्स्टिट्यूशन से ही होंगे. सो आई हैव पुट sin inverse x as theta, then x becomes sin theta, then dx becomes cos theta d theta. So this whole expression आपका ये था थीटा का स्क्वायर हो गया एंड dx हो गया cos theta d theta. ओके, अब इसमें बाई पार्ट्स लगेगा. वील टेक एल्जेब्रिक एज अ फर्स्ट, ट्रिग्नोमेट्रिक एज अ सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ कॉस इज साइन माइनस डेरिवेटिव ऑफ दिस इज 2 थीटा एंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस वाज साइन थीटा. दिस विल बी कॉपीड एज इट इज, -2 स्केलर हमारा बाहर आ गया. अब इसमें फिर बाई पार्ट्स लगाओगे आप, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन. सो थीटा फर्स्ट एज इट इज, इंटीग्रल ऑफ साइन इज माइनस कॉस, then minus of integration of derivative of theta is 1 and integral of sine is minus cos, right? Then in the second go, copying this as it is, ये multiply होके minus minus plus 2 theta cos theta हो गया, ये minus minus again and one more minus will make it negative. 3 negatives, -2 and cos theta का integration वापस आएगा sin theta. अब हम वापस इसे x के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे बिकॉज द क्वेश्चन वाज इन टर्म्स ऑफ x. सो वी हैड थीटा एंड वी न्यू थीटा इज साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x का स्क्वायर हो गया एंड देन साइन थीटा हमारा x है, देन 2 थीटा अगेन साइन इनवर्स x है एंड फिर आया है कॉस थीटा. हमारे पास साइन थीटा x है तो कॉस थीटा को हम लिखेंगे √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. सो कॉस थीटा इज हियर √1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया. Then minus of 2 sin theta was x only. This whole is your answer. Alright. Now next I have taken the 13th one. Rest ये सारे easy हैं बेटा. They are see इसमें आप cos inverse x को t रखोगे, ये पूरा आपका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव में कंज्यूम हो जाएगा, सिंपल बन जाएगा फंक्शन. sec square x का इंटीग्रल आपको आता है. ओके, तो these functions, rest all the functions are simple out here. खाली दिखने में आपको लग रहा है, once you start doing them after understanding these examples they are going to be simple. okay, so this is tan inverse x left. जब हमारे पास खाली एक अकेला फंक्शन आ जाता है तो हम इसको मानते हैं this into 1. okay, because we don't know the result for tan inverse x, तो फिर क्या पार्ट्स लगाना पड़ता है इसमें, तो उस पार्ट्स के लिए हम मानते हैं 1 कैन बी ट्रीटेड एज एल्जेब्रिक फंक्शन चिल्ड्रन. ओके, बिकॉज दैट इज x टू द पावर ऑफ एनीथिंग टू द पावर ऑफ 0 इज 1, तो हम इसको एल्जेब्रिक फंक्शन ट्रीट कर सकते हैं. सो दैट tan inverse x वी आर गोइंग टू राइट एज tan inverse x into 1 and we are going to take I obviously has to be the first function, algebraic function, second function. So applying the formula, first function as it is, integral of second function, integration of 1 is x minus integration of derivative of tan inverse x is 1 upon 1 plus x square, integration of 1 is x. ओके, तो ये तो सिंप्लीफाई हो गया, ये कॉपी हो जाएगा हमारा. इसमें हमें थोड़ा मेहनत करना है तो उसको मैंने लिख दिया है I' I1 कुछ भी. दिस इज अनदर इंटीग्रेशन क्योंकि उसमें हमें ट्रिक लगानी है.
ओके सो अब हम इस पार्ट का इंटीग्रेशन अलग से फाइंड कर ले रहे हैं, इंटीग्रल. ओके सो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स मेरे पास ऑलरेडी था, आई हैव मल्टीप्लाइड इट बाई 2 एंड डिवाइडेड इट बाई 2. Why? Because I'm going to take this denominator now 1 plus x square as t, and then I know that 2x dx would be replaced by dt, right? So to be able to do that, this whole I've done that trick there. नहीं भी करोगे तो आप substitution करोगे तो automatically आता है. You've done those type of questions. So this becomes dt upon t. That is your log form. So half of log of t की जगह मैंने t का वैल्यू रख दिया 1 plus x square. Hence ये जो मेरा इंटीग्रल था विल बी, द फर्स्ट पार्ट हैज टू बी कॉपीड एज इट इज, वो ऑलरेडी सिंप्लीफाई हो गया था. माइनस हाफ, माइनस वॉज ऑलरेडी देयर, हाफ यहाँ पे हमारा आ ही रहा है, माइनस हाफ, एंड सो दैट्स योर आंसर.